वेलकम टू देसी जायका। तो आज मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच पेस्ट्री, वो भी 10 मिनट में। बहुत ही इजी आसान है बनाना, बहुत ही जल्दी बन जाता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए मैं थोड़ा कम 1 गिलास पानी ली हूँ, क्योंकि ब्रेड फीका रहता है ना, इसके लिए थोड़ा सा शुगर ज़्यादा डालेंगे इसमें। इससे मैं 5 चम्मच लूँगी, लगभग 100 ग्राम। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखेंगे मीठा कम हो रहा है तो और थोड़ा सा 1 चम्मच डालूँगी। तो इसको जब तक अच्छे से ये पिघल ना जाए, तो दूसरा स्टेप बता देती हूँ मैं। और दूसरा है फ्रेश ब्रेड ले लीजिए, तो उससे बहुत ही अच्छा डिलीशियस पेस्ट्री बनती है। तो यहाँ पर तो ये जो किनारे हैं इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं सारे कटिंग कर चुकी हूँ। चलिए अभी दूसरा स्टेप बता देती हूँ। चलिए यहाँ पर ली हूँ व्हिप क्रीम। केक डेकोर शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए इसको बीट कर लेते हैं। चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिए मैं बटर स्कॉच के बॉल्स लिए हूँ। तो इस तरीक़ा से मैंने क्रश कर लिया इसको, और उसके बाद में बटर स्कॉच। तो ये कैसे बनाना है आपको मैं बताई हूँ पहला वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर व्हिप क्रीम लगा लेंगे, ताकि हमारा ब्रेड इससे अच्छे से चिपके रहे।